Navratri. Yeah. We should there is a voice in the background. Somebody, I don't know. Yeah. So it's 3, 2, 1. We are live to the audience. We can start this meeting. Over to you, Meety ma'am. Thank you. Thank you so much. Very warm welcome and good evening to all the ladies and gentlemen who are joining us from all across India. Myself, Dr. Miti Katakwar. I am a senior medical advisor from Lupin. And on behalf of Lupin, I'd like to extend a very warm welcome to all of you. We really appreciate all of you for taking time out to join us today for this program on breast cancer awareness and support. So this month of October is celebrated as World Breast Cancer Awareness Month. Being diagnosed with breast cancer, it alters the course of one's life. And with the hope of bringing knowledge and awareness about breast cancer and inspiring those going through this disease, we are bringing to you this campaign called as Protsahan. So Protsahan basically means encouragement, or stimulation. So this is an effort to bring in some stimulation to make women more aware about the prevention, symptoms, risk factors, and treatment of breast cancer. For today's breast cancer talk, we are pleased to have a moderator, Dr. Priya Tiwari. She is a senior medical oncologist working at Artemis Hospital, Gurgaon. We also have a few of cancer survivors with us, and I'm very happy to introduce Ms. Chavi Mittal. She is a social media influencer, co-founder of SIT, and founder of Being Woman. She is an actor, singer, model, writer, producer, blogger, and a YouTuber. She has a variety of television shows and films in a kitty. To just give a few glimpses of the overall work that she has done. So she has worked in various television series like Tumhari Disha, Ghar Ki Lakshmi Betiyan, Virasat, Ek Chutki Asman. Probably these are few of the highlights that I can recall from top of my mind. She has also worked in a few of the films like Ek Viva Aisa Bhi and Kaise Kahe. So Chavi, she is making waves with her maiden venture Being Woman with Chavi, which is everything about women, mothers, entrepreneurs, and go-getters. Her YouTube channel by the same name is a destination for all women. She continues to inspire one and all with her motivational and heartfelt blogs and shows on her social media platforms. She has more than 5 lakh followers on Instagram and almost 2 lakh plus subscribers on YouTube. She had recently conquered the breast cancer and is leading a normal and healthy life. At the same time, she has been quite vocal about the challenges and her treatment journey during breast cancer. So to motivate and to inspire other patients who are suffering from breast cancer, who else would be a better speaker than Chavi Mittal? We are very happy to have you here, Ms. Chavi. With this background, I would also like to introduce a very vibrant and young dynamic leader who happens to be a senior general manager of sales and marketing of Lupin, Mr. Rahul Shinde. He will help us understand the thought process behind this initiative in much more details. Very warm welcome to you, sir. And over to you. I'll ask you to take the proceedings further. Thanks, Dr. Miti. On behalf of Lupin Oncology team, I appreciate and I thank all for taking out time today evening and attending this program on the occasion of World Breast Cancer Awareness Month, Protsahan, as what Dr. Miti was highlighting. Protsahan is one of the many insightful patient-centric initiatives that Lupin takes across disease elements, and it is an initiative by Lupin Oncology, which is more towards patient centricity angle. It is said that cancer is a journey, but one has to walk the road alone. There are many places to stop along the way and get nourishment. One just have to be the willing to take it. Sir, you are on mute. Please unmute yourself. Is it fine now? Yes, audible, sir. Yeah. Thank you. So Protsahan is one such initiative by Lupin Oncology,
which strives to provide nourishment along the journey of the patient with breast cancer. With this initiative of Protsahan, we at Lupin feel and believe that we need to go the extra mile and work collectively with esteemed medical oncologists of India towards patient centricity for a better tomorrow, and increase the awareness of breast cancer and save more lives. In this journey of breast cancer patient, Protsahan is definitely a step forward, an initiative by Lupin Oncology towards nourishment, towards sharing views from the experts, sharing views from the medical oncologist, and sharing life experiences, how life can be better tomorrow through a Protsahan initiative. Last year, people who have attended last year the Protsahan initiative, an initiative over here has digitally reached out to almost 22 lakh population of India, raising awareness on breast cancer through the Protsahan program. Nourishment is a way forward for people who are staying today, working together, as well as more happier life for tomorrow. Along with Protsahan, Lupin Oncology also has collaborated with Niramai, a health analyst by Bangalore-based technological-driven company developing AI-driven diagnostic solutions with a mission to detect early-stage cancer and save more lives. I think these initiatives are really helpful for patients who are on a journey, who need nourishment and who need a beautiful tomorrow to live a better life in a better way. To support the Protsahan initiative on increasing awareness on breast cancer and to provide nourishment to breast cancer patients, on board today we have distinguished panel members who will take this program forward. Please join with me and give a warm welcome to Dr. Priya Tiwari and Chavi Mittal for having on board today for this initiative on breast cancer awareness and sharing the views by none other than Chavi Mittal, who is on board today. We are happy to have both here for this initiative to share your views and perspective on breast cancer. I would now like to hand over the session to our moderator, Dr. Priya Tiwari, who will take the program ahead with this initiative. Thanks everyone for joining, and over to you, Dr. Priya. Thank you, Shinde ji, and namaskar. Wonderful platform hai Protsahan. We did it last year, and it believe me, it spread lot of awareness about breast cancer. So I'm thankful for Lupin for carrying this forward. I am Dr. Priya Tiwari, Senior Consultant Medical Oncologist, Artemis Hospital. ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इंसिडेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. कुछ तो अवेयरनेस की वजह से भी ज्यादा डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स का भी रोल है. तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं ब्रीफली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, और उसके बाद छवि जी से उनकी स्टोरी सुनेंगे. ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, मेल्स को भी हो सकता है. आई थिंक ये बात लोगों को पता नहीं होगी कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स को भी होता है. जी, ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को भी हो सकता है. ये ज्यादातर बढ़ती उम्र का रोग है, लेकिन हाँ, अब हम यंग एज में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देख रहे हैं. क्यों देख रहे हैं? लाइफस्टाइल इसका एक बहुत बड़ा कारण है. ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन के इम्बैलेंस से होने वाली डिजीज है. तो किसी भी फैक्टर की वजह से अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस बढ़ते हैं तब ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखा जाता है. और किसी भी वजह से अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस कम कर सकें, जैसे कि एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, तो कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है. आजकल अल्कोहल इज बिकमिंग वन ऑफ द वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर्स. अल्कोहल की वजह से एस्ट्रोजेंस वाले जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनका बॉडी में काफी इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी, क्योंकि मोटापे की वजह से अगेन एस्ट्रोजेंस का बॉडी में इम्बैलेंस होता है. फिर इसके अलावा ये देखा गया है कि 5 to 10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि उनकी फैमिलीज में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे एबनॉर्मल जीन्स हैं जिनकी वजह से कैंसर का रिस्क जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट हो सकता है, और जिसकी वजह से उनको कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है.
इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन, स्पेशली अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन लेडीज में, जैसे कि अगर या तो वो लेट प्रेगनेंसी करें तो उसमें भी अनबैलेंस एस्ट्रोजन्स काफी हो जाते हैं बॉडी में, और जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो रिस्क कैसे कम कर सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे। अब दूसरा सबसे जरूरी सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बाद ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। लेकिन हाँ, अब उससे पहले हम ये जानेंगे छवि जी की स्टोरी। छवि की स्टोरी आपके बारे में, छवि जी आपके सामने छवि है, देखने में बड़ी सुंदर है, और इनकी कहानियां, इनकी मूवीज और इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत कम है। But she is an exemplary example in a way that she has come out with her story. She has not hidden it, and she has stood as a pillar of strength for many out there. So here is her example and her story. Chavi, please. Thank you so much, firstly, doctor, and thank you so much, Dr. Miti. इतना लंबा introduction आपने मेरा पढ़ा, मैं तो खुद ही impress हो गई अपने आप से. But as far as my story goes, it's pretty much out there in the open. I've literally shared every step of my cancer journey. So just start from this day one when you felt that there could be something wrong. What was that? So I had a gym injury in my chest, Okay. which required an MRI. Okay. But apparently it turned out that the gym injury was nothing. It was just a little fluid buildup, but there was a little lump which did not look pretty. Okay. और उस समय जब मुझे बोला गया कि we need to look further into it, we need to examine it further, we need to do a sonography, we need to do a biopsy or whatever. That was the first time that I felt that, oh, this could be bad. And I think even at that time, what I felt is that it's not possible. ये तो हो ही नहीं सकता, because and I somehow thought that the lump that they are talking about, I've been living with it ever since I have breasts. But when we started examining it more, when we examined it further, we did a sonography and then a biopsy. मुझे ऐसा समझ में आया जो चीज, I mean, this is also information that I didn't know earlier, but I know it now, is that lumps can be of different kinds. There are some lumps which are malignant, some are not. So the lumps which I was living with were obviously not cancerous, but this particular lump, I still have 2 other lumps which are not cancerous, but this particular lump was cancerous. So it's very important for everybody to do a self-examination to understand which is an old lump and which is the new one which has formed. And because I wasn't doing my self-examination ever, I didn't feel that lump, which probably had been there for whatever number of months. So I don't even know, I can't even say for how long it was there. And once the cancer was confirmed, the first thought that came to my mind was how fortunate I am to find it because of a gym injury. I mean, what are the chances? I did not see any other symptoms. There was no pain, there was no discharge, there was no inverted nipples or any other symptoms that you see of breast cancer, but it was just sitting there in the MRI. So the first thought that came to my mind was that I'm really fortunate. I'm also fortunate that it was a grade 1 cancer, which is slow progressing. So even if I didn't, find out about that as soon as I did, I still had some time. And I was very fortunate that my course of treatment was very well defined. My doctors knew exactly what has to be done. There was no doubt in their minds that the cancer is going to be cured, right? So these are things which gave me a lot of courage. And from there on, I realized that ever since we are children, we always get very scared of the C word because we've heard people talk about it in that sense. And we always feel that, oh, cancer ho gaya to koi bahut badi baat hogi. And when I experienced it, I realized ki theek hai, matlab it's curable. I found it out. The only thing which was important in this case was early detection. So I thought it's very important to talk about it and let people know that it doesn't always have to be so bad. So Chavi, actually you brought so many important points here, so many of them. लोगों को लगता है कि see for you the trauma, the chest trauma that brought the lump into
लाइट. सो द थिंग इज, लोगों को लगता है कि चोट की वजह से ही कैंसर हो गया. सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ दैट वी कॉमनली एनकाउंटर कि हाँ चोट लगी उसकी वजह से हमें कैंसर हो गया. Trauma, acute trauma is not a risk factor for cancer. There might be a pre-existing lump जो कि किसी चोट की वजह से पकड़ में आ जाता है. And fortunately, because of that, it was detected in a condition when it was still curable. So second important myth that people have, that cancers are incurable. But we now hear so many stories, and your story is again an example that yes, cancer, if detected in time, is fully curable. तीसरा सवाल एक जो आपसे मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वर यू स्केयर्ड ऑफ बायोप्सी? लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड ऑफ बायोप्सी. नीडल डालेंगे तो कैंसर फैल जाएगा. टेल मी अबाउट दैट. So no, I didn't have any thoughts as such कि needle डालेंगे तो कैंसर फैल जाएगा is not something that I thought of. घर में भी किसी ने नहीं बोला, चाची ने, मम्मी ने, मौसी ने, किसी ने नहीं बोला बेटा लंप को छेड़ना मत? Okay, no. मतलब you know there is a support system which is always guiding you. So and I'll tell you all advices. the other two lumps which I have, which I got tested, my mother got them tested when I was 12 years old. That time we were told that these are non-cancerous, and that time of course I was told कि इसको हाथ मत लगाना, इसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है, कुछ मत करना, which is fine because even the doctor said that you can live with it, there's no problem. But when there was a fear that this could be cancerous, nobody said don't do a biopsy, because everybody said do it and rule it out. Nobody thought it is cancerous. Obviously you want to be positive about it, and you never feel कि मेरे साथ हो सकता है. You always feel कि ये तो दूसरों के साथ होता है. You never feel कि मेरे साथ हो सकता है. So they all said that you do the biopsy, get it out of your way, you know, get it out of the way, just rule it out. And that's why I went. You had good guidance available. Yes, and I want to say that the radiologist who did my biopsy was very, very, helpful, and very, very, she was insistent that I have to do it. कि नहीं करने का कोई वो है ही नहीं. So I asked her that the questions that I asked her was that how big is the needle going to be? How much, like how bad is it going to look? Because I'm shooting. Will I be able to shoot? She said you finish your shoot and then come after 4 days, 5 days, whatever number of days you need, but don't take too long because you don't have forever. We want to test it right now. So I finished my immediate shoot which was at hand, and I went and got the biopsy done. So a very common situation that we encounter in OPD is कि मैडम आप कोई तो जांच करवा लो लेकिन बायोप्सी रहने दो. आपको जो भी जांच करवानी है, जो स्कैन करवानी है, आप सब करवा लो लेकिन बायोप्सी रहने दो. So your statement there is very important. We have another cancer survivor here, Renu ji. And Renu ji, आपके भी thoughts I would like to hear on this one, because this is a very important thought कि अगर बायोप्सी करवाने से पहले आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा. प्लीज रेनू जी, आप म्यूट पर हैं. अनम्यूट कर लीजिएगा. हाँ जी मैम, यू आर ऑन म्यूट. हेलो. हाँ जी रेनू जी प्लीज. मैम मुझे कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा. ओके. जैसे ही मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बताया कि कोई शिस्ट है और शायद ये डेंजर वाली लग रही है, मुझे कैंसर वाला लग रहा है. तो मैंने एक लोकल वहां पे बायोप्सी कराया तो मेरा पॉजिटिव आया. फिर मैंने डॉक्टर दीपक झा को सीधा व्हाट्सएप किया और उन्होंने बायोप्सी कर दिया. मैंने पूछा ही नहीं मैम किसी से बायोप्सी कराना है नहीं कराना. ओके ठीक है. हेलो. चलिए, आई थिंक ये चेंजिंग भारत है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं और आप इन्वेस्टिगेशन से और बायोप्सी से नहीं डर रहे हैं, विच इज आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड. दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमें यही नहीं That brings us पता होगा कि है क्या. हेलो. हाँ जी रेनू जी बोलिए. अगर हमें बायोप्सी नहीं कराएंगे तो मैम हम आगे का कैसे पार्ट फेस कर पाएंगे. जी बिल्कुल, ये बात तो सही है. फिर जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों के मन में अलग अलग तरह का डर है. ऐसा है मैम, किसी की ना सुने. अगर आपको लगता है जैसा डॉक्टर कहे वैसे अपने चलते रहे. ठीक है. आपके रिश्तेदारी बात सुन रहे होंगे. अच्छा, सो मैं ये कह रही थी कि दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस डिस्कशन, जो छवि भी कह रही हैं कि नॉट एवरी लंप इज कैंसर. ओके, बट इफ यू गेट अ लंप, तो अगर मैं स्टैट्स दूं आपको तो 10 में से 8 लंप जो ब्रेस्ट में होते हैं वो एक्चुअली कैंसर नहीं है. लेकिन अगर आपको लंप फील हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाके ये बात जरूर सुनिश्चित करें कि वो लंप किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन चिन्ह या सिम्टम ब्रेस्ट लंप ही होता है.
गांठें बहुत वजहों से बनती हैं, इन्फेक्शंस में बनती हैं, सिंपल हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होती हैं, बिनाइन लम्प्स होती हैं, एज की वजह से ब्रेस्ट की कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाता है, फैट टिश्यू का डिपॉजिट हो जाता है, बहुत सारी वजहों से लम्प्स बनते हैं, बट नॉट एवरी लम्प इज कैंसर। दूसरे सिम्टम क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? निप्पल से अगर डिस्चार्ज होने लगे, कभी कभी मिल्की हो सकता है, लेकिन अगर ब्लड टेस्ट डिस्चार्ज, खून आने लगे निप्पल से। इसके अलावा सेज एंड जो शेप एंड साइज है ब्रेस्ट का, उसमें अगर परिवर्तन दिखे, तो जैसे कि छवि भी कह रही थी कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर ब्रेस्ट हेल्थ। इसका मतलब आपके ब्रेस्ट कैसे दिखते हैं इसका आपको अच्छे से अंदाजा होना चाहिए, ताकि अगर कोई साइज या शेप में डिफरेंस आ जाए तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में मेथड होता है जिसे कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। 20 साल से उम्र की ऊपर की सारी लड़कियों को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सीखना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। यह वंस अ मंथ करना चाहिए, और अगर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो इससे आपका ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगा, और कोई शेप में, साइज में, निप्पल में लंप भी कोई अगर प्रेजेंट होगा तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कैंसर भी अर्ली डिटेक्ट हो सकता है और आप डॉक्टर के पास जाके जांचें करवा के समय रहते ही इलाज करवा सकते हैं। एक छवि आपसे एक दूसरा सवाल पूछूंगी, और ये बहुत जरूरी सवाल है। आपको क्या लगता है कि हमारे रिलेटिव्स, एक तो होता है कि जैसे घर में आपने न्यूज़ बताई, तो आपने ये न्यूज़ कैसे ब्रेक की अपने रिलेटिव्स में, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है जानना। अपनी मम्मी को कैसे बताएं, पापा को कैसे बताएं, बच्चों को कैसे बताएं, फ्रेंड्स को कैसे ब्रेक करें, या कहीं प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स है तो उनको बताएं या ना बताएं। तो इन सारे क्वेश्चंस का सामना आपने कैसे किया? टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतना डिटेल में इसके बारे में सोचा ही नहीं। Okay. और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग अ लिटिल अर्लियर कि बचपन से हमें कैंसर वर्ड से बहुत डर लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। एंड इफ आई वांट टू चेंज दैट इन एनी वे पॉसिबल, the first step is that I will normalize it in my own life and my own family. So when I talk to my parents, when I talk to my husband, when I talk to my kids, the first thing is that I will be completely in control and not going all over the place saying ki, oh god, mujhe cancer ho gaya. You know, so it has to be normal because it's curable. What is there to worry? It's a surgery. There is a course of treatment. It can be cured. And I told my daughter, I told her that, you know, just like I went to the hospital and they cut my tummy out to bring your little brother out, and then they sewed it back, and then I came home and I took a few weeks to recover. This will be exactly like that. I'll go, they'll take out the little thing from the breast, then they'll sew it up, and I'll come back and I'll recover. So there's nothing to worry. You can come and visit me in the hospital, and this will all be behind us in no time. And that's exactly what I told my parents also. Everybody that I spoke to, that, you know, this has happened, but it's okay, it's fine. My doctors are very confident and hence I'm confident. मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो लेमैन हूँ। जब एक्सपर्ट इंसान मुझसे बोल रहा है कि ये कुछ नहीं है, हम ठीक कर देंगे, तो फिर मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। And I think because of the way I could face it, everybody around me faced it very well, and they were all very positive. And the whole thing, the whole atmosphere, when it's positive, I think you can win any fight happily. So that's a very important statement. Staying positive is very important. Getting the right information is very important. And for doctors, I think it's very important that we have to impart that confidence. We need to have that confidence in the treatment, and that confidence we need to impart to our patients, because, you know, patients, that is what they are getting from us, and we are the ultimate sources. So एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, that जो भी जिस भी किसी को डायग्नोसिस मिलता है कैंसर का, प्लीज गूगल मत करिए, बिकॉज कैंसर कई तरह का होता है, और जस्ट बिकॉज आप गूगल पे कुछ गलत चीज पढ़ लेंगे तो आप डर जाएंगे और आपको लगेगा कि ओ गॉड ये होगा मेरे साथ भी। वो मत कीजिए। एंड आई थिंक इवन टॉकिंग टू अदर कैंसर सर्वाइवर्स, you completely avoid it, because somebody might have had a very bad experience with it. Yes. Doesn't mean you will also have a bad experience. They The might only discourage you. person, the only person you listen to is your doctor. You ask them 50,000 questions, and I think my doctors will never forget me for the rest of their lives because of the kind of questions I ask them. And did not seek second opinion, third opinion? No, you have to have faith. अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर कौन अपना काम कोई नहीं कर सकता। फिर तो आप डाउट आ गया दिमाग में, फिर डाउट नहीं करना है।
So this is very important क्योंकि आपने ये डिस्कशन लाया. It's a very important thing that you brought it. I'm glad you brought it. कि लोग काफी गूगल करते हैं. देखिए कुछ चीजें तो जानना ठीक है, बहुत सारे हो सकता है क्वेश्चंस डॉक्टर बता ना पाए, आपने कुछ गूगल कर लिया, बट पीपल आर इनफाइनाइटली इन्वॉल्व इन इंटरनेट सो मच. जैसे कि मैं आपको एक सवाल, अभी मैं एग्जांपल दे रही थी बायोप्सी का. People will hear side effects of biopsy, problem with biopsy, and they'll find 10,000 pages saying biopsy में bleeding हो गई, biopsy की वजह से जान चली गई, biopsy की वजह से ये हो गया. And you know, people will come with all that, you know, with all that problems in their head filled with कि हाँ biopsy नहीं करवानी. वैसे ही अगर कुछ आप treatment लिखते हो, suppose if we talk about chemotherapy, which is one of the important steps in breast cancer for very many patients, and if you take a simple paracetamol tablet, उसके पैकेट इंसर्ट पे भी 100 साइड इफेक्ट्स लिखे रहते हैं, राइट? पैरासीटामोल, if we are talking, which we all know is usually harmless. वैसे ही कीमोथेरेपी के बारे में people will Google about each and every side effect, and it will be like, my God, my God, my God, my God. So you know, they go 2 steps behind. So if you want credible information, as rightly said, doctors are your point of contact, and you can ask them that if you feel that they have less time and still they have not clarified your queries, what are the credible and the authentic sources. Maybe they will tell you about the websites, they will tell you about some kind of, they'll give you some handouts, reading materials, but it's very important that you only go through the credible sources that your doctors are suggesting. Okay, it's very important. Unnecessarily Google करने से सबसे problematic बात होती है कि आपका अपना mind is actually always filled with the thought of the disease, and we want to have a mental space which is free of the disease, isn't it? That's one of the very important coping strategies. And I want to also add here that sometimes abhi cancer, like nobody knows कि exactly क्यों होता है किसी को कैंसर, right? So because medical science doesn't know कि किसी को कैंसर क्यों होता है, I believe that like lifestyle, yes, but it also depends a lot on how you think. Your thoughts also play a very important part. So if you have been diagnosed with cancer, you do not want to think negative thoughts. You don't want to think कि ये what is the worst case scenario, वो मेरे साथ हो गया तो. So I asked my doctors, what are the side effects of every surgery that they performed? What is the worst thing that could happen? How is the treatment going to go? What are the worst kind of side effects I can see? How long will the recovery take? What is my life going to be after cancer? Once cancer is out of my body? I asked them a lot of questions about this, and thankfully, I'm very blessed that my doctors are as positive as I am. They all said कि 99.999% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, you will be fine, don't worry. So I just didn't think like that, and everything. And today when 2-3 days back I had a follow-up after the 3-month follow-up after the radiotherapy was over, they all were very amazed. They said, you know, इसमें ये भी हो, then they told me कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, कुछ नहीं, why are you looking so good? So I think that's how the power of positive thinking works. Yes. So a positive mindset actually takes care of a lot of problems. You will have less of treatment side effects. You will have better coping strategies. And once you start to recover from the ultimate experience, the recovery period will also be short. Absolutely. So staying positive and building a positive environment around you बहुत ज़रूरी है. छवि, आपसे पूछेंगे, आप थोड़ा ट्रीटमेंट हमें डिस्क्राइब करिए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में पता चले. छवि, आप पहले बताइएगा. प्लीज रेणु जी, आपसे भी सुनना चाहूंगी ट्रीटमेंट आपका. Yes, Chavi. So my treatment was very simple and very well defined. First, we performed the surgeries. I was given the option to do a reconstruction, which I took. So first, we did a lumpectomy. The lump, which is खाली lump को निकाल देते हैं, वो हमने किया. उसके बाद हमने एक लैट मसल से रिकंस्ट्रक्शन की, और हमने आर्मपिट्स में से हमेशा एक एक्सिला स्टिचेस होते हैं जहां से लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं चेक करने के लिए. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो वेदर द कैंसर हैज स्प्रेड और नॉट, एंड इफ इट हैज देन योर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन दैट कि अगर फैल गया है तो कीमोथेरेपी की भी आपको जरूरत पड़ सकती है. माय कैंसर वाज वेरी it hadn't spread at all. Yeah, so I did not need any chemotherapy. I needed 20 cycles of radiation, which is radiotherapy, which was again radiotherapy के भी कुछ side effects हो सकते हैं. I was very
how should I put it? I had made up my mind that I'm not going to see any of those side effects. So I used to go for my radiotherapy in the morning. Then I used to go to office every day. Oh, very And good. थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट होता है वो तो होगा ही. आई मीन डिस्कम्फर्ट तो कोविड में भी होता है, फ्लू में भी होता है, जुकाम हो जाए तो भी होता That's a है. nice analogy. तो you live with it. And आपको जुकाम होता है तो भी आप ऑफिस जाते हो अपना हैंकी लेके. तो मैं जाती थी, ऐसे कभी कभी पकड़ना पड़ता था मुझे, बिकॉज इट यूज्ड टू पेन अ लिटिल. Redness भी होती है कभी कभी रेडिएशन के बाद. Redness होती है, burning होती है, and I used to see massive swelling. That was my main side effect. And Okay. slight bit of color change is what I felt. Okay. But it all passes. I mean, it's been Yes. 3 months So it's and all everything gone, isn't it? absolutely fine. So that's very important. They are all reversible, isn't it? Yes, even if the hair loss that you see, and radiotherapy में भी थोड़ा सा hair loss होता है, सब ठीक हो जाता है, सब वापस आ जाता है. Everything comes back to normal. You can see that your glowing personality speaks for itself. रेणु जी प्लीज. आई थिंक आपका थोड़ा सा ट्रीटमेंट पार्ट में इट वाज थोड़ा सा एक्सटेंसिव था. लोकल रेणु जी का जो डिजीज था दैट वाज व्हाट वी कॉल इज मेडिकली या लोकली एडवांस डिजीज. सो मैम के ट्रीटमेंट आर्मामेंटेरियम में हमने सारी चीजें यूज की थी. रेणु जी प्लीज गो अहेड, शेयर योर एक्सपीरियंस. जैसे ही डायग्नोज हुआ, स्टार्टिंग में कीमो के बाद मैम सर्जरी हुआ. सर्जरी में लंप निकाला. कितने साइकिल्स दिए थे आपको? 8. ठीक है. पहले 4 लिए थे मैम, फिर 4 उसके बाद लिए थे. ठीक है. 8 साइकिल्स एंड मैम उसके बाद सर्जरी और फिर मैम उसके बाद और एक वो इंजेक्शन लगा था. फिर उसके बाद मैम 28 साइकिल रेडिएशन थेरेपी. आपको हार्मोनल थेरेपी चल रही है? हाँ जी, हार्मोनल थेरेपी चल रही है मैम. एक इंजेक्शन आफ्टर एवरी 3 months एंड पर डे एक टैबलेट. टैबलेट्स चल रही हैं. सो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट अगर हम समराइज करें तो सपोज आपको एक लंप फील हुआ और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको टेस्ट करेगा, खुद भी एग्जामिन करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल एग्जामिनेशन. और उसके बाद आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे और आर्मपिट्स, जैसे छवि बता रही हैं कि आर्मपिट का भी टेस्ट हुआ था उनका, तो उसका भी एग्जामिनेशन होता है. ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से शुरू होकर आर्मपिट के लिम्फ नोड्स में जाता है. इसीलिए ये मैंडेटरी है कि हम आर्मपिट भी हमेशा चेक करें, एग्जामिन करें और इन्वेस्टिगेट करें, ना केवल ब्रेस्ट बल्कि आर्मपिट्स भी. तो इसके लिए पहले तो जैसे हम ब्रेस्ट का स्कैन करते हैं जिसमें कि मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. फिर इसके बाद लगता है कि हाँ, ये हमें थोड़ा आइडिया दे सकता है कि ब्रेस्ट का जो लंप है वो उसका नेचर क्या है. इज इट बिनाइन, इज इट मेलिग्नेंट. हमें लगता है कि हाँ, अगर ये कैंसरस हो सकता है तो उसकी हम बायोप्सी करते हैं. बायोप्सी का अभी पहले होता था कि चलो पूरी लंप ही निकाल दो, चीरा फाड़ा लगा दो. अब वो सब टेक्निक्स नहीं है. अब एक अल्ट्रासाउंड के अंदर निडल डाल के हम सैंपल ले लेते हैं, तो जिसमें वूंड भी जल्दी हील हो जाता है ना. तो इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क भी काफी कम है, ब्लीडिंग का रिस्क भी काफी कम है. तो बायोप्सी करके हमने टिश्यू ले ली, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर लिया और उसमें हमें कैंसर पता चल गया. इसके बाद कैंसर कई तरह का होता है, उसके लिए हमें देखना होता है, फर्दर एग्जामिनेशन करना होता है, जिसमें कि हम देखते हैं एस्ट्रोजन वाले रिसेप्टर दिख रहे हैं कि नहीं. ये सारे के सारे ना, अगर मैं आपको बताऊं तो मेडिकली हम कहते हैं प्रोटीन सिग्नेचर्स होते हैं. कैंसर के ना प्रोटीन सिग्नेचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है. जैसे रेणु जी बता रही हैं कि इनको हार्मोनल थेरेपी चल रही है, क्योंकि इनके कैंसर का जब हमने मुआयना किया तो हमें ये पता चला कि इनकी जो बीमारी थी वो हार्मोनल रिसेप्टर ड्रिवन थी, हार्मोन ड्रिवन थी बेसिकली, है ना. और इसीलिए अगर हम उनको ब्लॉक कर देंगे तो बीमारी वापस आने का रिस्क कम हो जाएगा. अच्छा, सर्जरी करके लंप निकाल दिया, बीमारी निकाल दी, एक्जिला की भी वो लंप्स जो अगर दिख रहे थे वो भी निकाल दिए, तो ये तो सर्जरी कर ली. लेकिन इसके अलावा कीमोथेरेपी क्यों दे रहे हैं? कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले कई बार देखते हैं, अगर हमें लगता है बीमारी ज्यादा है तो हम छोटा करते हैं. वी वांट टू श्रिंक इट, इजंट इट. इसलिए कई बार कीमोथेरेपी जो सुई वाली दवाइयां होती हैं उनकी सहायता ली जाती है. कीमोथेरेपी कई बार ऑपरेशन के बाद भी देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि क्या होता है, कैंसर के साथ जो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है कि आपने बीमारी तो निकाल दी, लेकिन कैंसर से ना कुछ सेल्स गोली की तरह, बंदूक की गोली की तरह ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ता है, जहां से बीमारी वापस आ सकती है. इसीलिए हमें तो केवल हमें ब्रेस्ट लंप नहीं निकालना, हमें तो जो छोटी मोटी सेल्स बॉडी में इधर उधर चली गई हैं उनका भी खात्मा करना है. इसलिए सर्जरी के बाद भी अगर हमें लगता है कि जरूरत है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं. हार्मोनल थेरेपी भी इसीलिए दी जाती है कि हाँ, कीमोथेरेपी दे दी, उससे कैंसर कम हो जाता है, वापस आने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, और हार्मोनल थेरेपी से भी ये रिस्क और कम हो जाता है. अच्छा, कैंसर में कुछ जड़ें होती हैं.
और इसीलिए रेडिएशन, आपने हमारे दोनों सर्वाइवर्स से सुना कि इनका रेडिएशन का प्रयोग किया, क्योंकि कैंसर की कुछ जड़ें होती हैं। हमने मेन लंप तो सर्जरी करके निकाल दी, लेकिन अब हम रेडिएशन क्या है, लेजर जैसी रेज होती है ना, जैसे कि आप सीटी स्कैन की मशीनें देखी होंगी वैसी मशीनें होती हैं, तो उसके अंदर पेशेंट को भेजते हैं और फिर उनका रेडिएशन हो जाता है, ताकि वो जो बची हुई जड़ें रह गई हैं उनका भी खात्मा हो जाए। तो रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपीज, हार्मोनल थेरेपी, ये सारे तरीके हैं ताकि कैंसर का जड़ से छुटकारा हो जाए और बीमारी वापस आने का रिस्क कम हो जाए। कई बार पेशेंट एडवांस स्टेजेस में हमारे पास आते हैं, जैसे कि स्टेज 4 कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना रिसर्च हुआ है वर्ल्ड में, क्योंकि ये सबसे कॉमन कैंसर है दुनिया में, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 4 के सर्वाइवर्स भी अभी काफी लंबे समय तक जी रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी आप समझ लीजिए कि जैसे डायबिटीज होती है, डायबिटीज ठीक तो नहीं होती, पर डायबिटीज का हम कुछ ना कुछ इलाज करके पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, ताकि वो अपना सारा रूटीन एक्टिविटी करें, और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेज 4 कैंसर जो है वो बिल्कुल ऐसी ही बीमारी हो रही है, और हम इसी रास्ते में चल रहे हैं कि पहले लगता था कि बीमारी फैल गई है शरीर में, 6-8 महीने ही लोग जिएंगे। अब इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज करके, क्योंकि हमारे पास काफी मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ गए हैं, हम एक के बाद यूज करके अब हम ये स्पैन बढ़ा रहे हैं, एंड वी आर गेनिंग एवरी डे दैट सर्वाइवल फिगर्स, वी आर improving every day in terms of survivals. And yes, we are seeing a lot of stage 4 patients who are living their life normally, doing their activities day to day as per just like me and you. So ये तो काफी सारी बातें थी. If there are few questions we can take. आप कुछ questions हैं तो please हमें बताइए. We be happy to take few of them. And then we'll talk about prevention. That is a very important talk. Okay, so people are congratulating us. छवि आपके लिए काफी congratulations हैं, रेनू जी आपके लिए भी हैं. Yes. So breast cancer के बारे में बहुत स्टिग्मा है. हम लोग शायद अगर लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, तो गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो ये देखा गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि लेडीज एटलीस्ट अपने स्पाउस को भी नहीं बताएंगी अंटिल एक घाव वाला वुंड ना बन जाए, फंगेटिंग वुंड ना बन जाए. तो क्योंकि ब्रेस्ट के बारे में लोगों को काफी वो है, स्टिग्मा तो बहुत है, तो इसीलिए सबसे जरूरी बात है, और इस डिस्कशन का एक मेन मोटिव ये है कि ब्रेस्ट लंप और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ जो स्टिग्मा है इसको हम कम करें. पुरुषों और औरतों दोनों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और जब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे तब तक हम शेम, गिल्ट से जूझते रहेंगे, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे सर्वाइवल फिगर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं. ब्रेस्ट कैंसर का अगर कुछ डेटा देना हो तो यूएस, चाइना, हर जगह ये बीमारी देखी जाती है, लेकिन अमेरिका में चूंकि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग इतनी कॉमन है, 40 साल के बाद वो स्क्रीन करना शुरू कर देते हैं. स्क्रीन करने का मतलब ये है कि सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आपकी उम्र 40 साल हो गई, आपने अपना 40th बर्थडे या 45th बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो आपको जाके अपना ब्रेस्ट कैंसर का जांच करवाना है, जिसमें कि मैमोग्राम की स्क्रीनिंग होती है. मैमोग्राम इज लाइक एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें अब रेडिएशन का एक्सपोजर का रिस्क नहीं है. छोटे छोटे लंप भी समय रहते पता चल जाते हैं, मटर के साइज के लंप पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की डेथ रेट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुकी है. आपको बस एक कंपैरिजन फिगर देती हूँ, क्योंकि इंडिया में स्क्रीनिंग मेथड्स इतने कॉमन नहीं है. आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप अपनी मदर, सिस्टर, इन सब की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, स्पेशली अगर उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है. मैमोग्राम अब हर जगह इंडिया में, बड़े छोटे शहरों में उपलब्ध है. अमेरिका में चूंकि स्क्रीनिंग इतनी कॉमन है और छोटे छोटे लम्प्स पता चल जाते हैं, जिन 8 महिलाओं में कैंसर पता चलता है उसमें हार्डली किसी एक की डेथ होगी. 7 लेडीज बिल्कुल क्योर हो जाती हैं. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 50% फीमेल्स हु आर डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर दे डाई ओनली बिकॉज दे आर नॉट डिटेक्टेड इन टाइम. सो इतना डिफरेंस है देखिए 2 कंट्रीज में, ओनली बिकॉज दे आर डूइंग स्क्रीनिंग एंड वी आर नॉट. जस्ट थिंक अबाउट द लाइव्स वी कैन एक्चुअली सेव. तो इसलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है. सो छवि, बैक टू यू. सो कैन यू शेयर समथिंग कि जैसे आपका ट्रीटमेंट हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट पर्ल्स लोगों के लिए, एडवाइसेस अबाउट दोज हु आर नाउ डायग्नोज्ड विद कैंसर और जो सर्वाइवर्स हैं. सो कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, इफ यू हैव एनी आइडिया एंड थॉट्स टू डिस्कस अबाउट योर डाइट एंड लाइफ स्टाइल which is helping you to cope up, please go ahead.
So diet and lifestyle, I think it depending on आपको I think just consider it like any other day. आपको क्या फील हो रहा है, आपको एसिडिटी ज्यादा हो गई है या कॉन्स्टिपेशन हो गई है या क्या आपको प्रॉब्लम लग रही है, यू कैन ऑल्टर योर डाइट अकॉर्डिंग टू दैट. That is one thing. Second thing which I would say is prioritize yourself. Prioritize yourself, and I've seen this in majority of especially Indian women. Once they become mothers, they only know how to prioritize the child, and you'll notice काम छोड़ देती हैं अपना, और अगर करती हैं तो बच्चों के टाइम टेबल के हिसाब से करती हैं. खाना उनके टाइम टेबल के हिसाब से बनता है, सोना उनके टाइम टेबल के हिसाब से बनता है, उनको क्या खाना है वही बनेगा, उनको छुट्टी पे कहाँ जाना है वहां जाएंगे. So that whole focus completely shifts towards the children or the family or the work. So I just want to say that if you have been diagnosed with cancer, maybe this is the change that you need to make in your life. Start prioritizing yourself, start thinking about what makes you happy, and start giving some time towards that also. Not saying neglect your responsibilities, but वो चीज भी करिए, क्योंकि लाइफ में क्या, what else can you change in your lifestyle other than okay if you're drinking you don't drink or you stop smoking. These are basic things, वो तो करनी नहीं चाहिए शुरुआत में ही. But और क्या change आप कर सकते हैं to reduce your stress levels and to be happier. So that is something which I would definitely like to say to anybody who's going through this. Yes, agree. So it's very important, like you also mentioned, that stress is also one of the big factors. And there is data, abhi medical science is also saying कि stress is one of the risk factors for cancer, and also it can have an impact over the outcomes. So जैसे छवि ने कहा कि हाँ, it's very important कि आप अपना mental well-being improve करिए. एक pause button होना बहुत जरूरी है at every time point in your life. And yes, you need to take out time for yourself. You take care of yourself, both mental, physical well-being, and that is where, क्योंकि good health will actually give rise to not just fewer cancer cases but also better treatment outcomes. आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. वी हैव सीन दैट पीपल, जैसे कि अभी कीमोथेरेपी की भी बातें हो रही हैं, लोगों को काफी डर लगता है. अब कीमोथेरेपीज वैसी नहीं थी जैसे 50 साल पहले या 40 साल पहले होती थी. अभी अब की मॉडर्न कीमोथेरेपीज आर वे सेफर. वी हैव बेटर सपोर्टिव मेडिसिन. उल्टी वगैरह कम करने की भी काफी अच्छी मेडिसिन है. बट व्हाट वी हैव सीन ना, सी लाइक यू ऑल्सो सेड एंड आई हैव ऑल्सो सेड दैट की कैंसर कैन हैपन टू एनीबडी और एवरीबडी. बट ये देखा गया है कि अगर यू हैव एन एक्टिव लाइफ स्टाइल, लोगों को लगता है लाइफ स्टाइल से क्या होगा, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, आप भी तो बोल रहे हो. लेकिन हाँ, एक तो हाँ कैंसर का रिस्क तो खैर कम होता है, लेकिन दूसरी जरूरी बात ये है आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं. वी हैव हैड पेशेंट्स हु आर लाइक so active, so physically fit, they do chemotherapy and they go to office and they do the most intense kind of chemotherapies. I'm not just talking about the lower dose, there are milder variation versions also. Lekin हाँ, they are so fit that it makes the journey much smoother. All the side effects will go down. Their recovery and the rehabilitation process is also very, very fast. So please take care of your health. It's very important that yes, your mental and physical well-being is taken care of. That brings us to a very important question. Can we prevent breast cancer? काफी लोग यही जानना चाहते होंगे. देखिए, कैंसर 100% हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ये किसी को भी हो सकता है. कुछ तो इस वजह से कि हमें सारे रिस्क फैक्टर्स अभी पता ही नहीं है, और कुछ इस वजह से भी कि कुछ बहुत सारे रिस्क फैक्टर शायद हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इवन एयर पोल्यूशन एंड द पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड that are there in the part of the food chain now can also cause, there is increasing risk of the contamination in the food that we see. The preservatives, everything contributes to the risk of cancer. So that part maybe we cannot avoid altogether, but yes, there is a part which we definitely can take care of. And ये तो एज ओल्ड चीजें हैं, बेसिक्स हैं, जो कि शायद बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, बट करना चाहिए. एक्सरसाइज 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 5 days in a week is must. हाफ एन आवर एक्सरसाइज करिए. कौन सी एक्सरसाइज? ब्रिस्क वॉक करिए. सो मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज हम बोलते हैं. अगर आप आधे घंटे 5 दिन भी कर रहे हैं, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, जॉगिंग करिए. जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं स्विमिंग करिए. अगर आप घर पे लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करिए. लेकिन हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज. ईट राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईट राइट? एक तो होता है कि जितना प्रोसेस फूड लेते हैं वो गड़बड़ है ना. रॉ डाइट जितना इंक्लूड करेंगे आप, सैलड्स इस्तेमाल करिए, जितना आपका कलरफुल प्लेट होगा खाने का, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट.
तो जैसे कि होता है बेरीज, इतनी जितना भी सैलड्स, बेरीज, फ्रूट्स, आप ये सारी चीजें, जितना भी कलरफुल आपका प्लेट होगा, जितना रंग बिरंगा प्लेट होगा ना आपका खाने का, उतना अच्छा है। और ये केवल ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं, ये सारे कैंसर्स का रिस्क कम करता है। इंडिया में काफी सारे कैंसर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है अब वो चेंज हो रहा है, घर से कुछ भी खा के निकल जाते हैं। सो वी नीड टू चेंज दैट। अच्छा, व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग? हाँ, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, दे आर नोन रिस्क फैक्टर्स। सब कहते हैं मेरे दादाजी तो शराब पीते हैं, उनको अल्कोहल तो कंजप्शन हो रहा है लेकिन कैंसर नहीं है, सिगरेट पीते हैं। तो फिर भी ठीक है, देखिए सिगरेट और शराब से बॉडी का हर ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो प्लीज कट डाउन। सोशल ड्रिंकिंग माइट बी ओके, बट प्लीज डोंट मेक इट अ रेगुलर हैबिट, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। कुछ लोग कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये होते हैं, नहीं, दे आर बैड फॉर योर हेल्थ ओवरऑल। और न केवल कैंसर बल्कि बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्ट्रोक का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क सब बढ़ जाता है। I also want to add something over Please. here, what you're Yes. saying about alcohol and smoking. Yes. हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर Yes. किसी का जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। मे बी Yes. उनकी टॉलरेंस कैपेसिटी आपके दादाजी की अच्छी होगी, जरूरी नहीं है कि आपकी भी अच्छी हो। So you know, it's just like Agreed. कोई 4 रोटी खाकर भी मोटा नहीं होगा, लेकिन कोई 2 रोटी खा के भी मोटा हो जाएगा। तो वो अपने अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, एवरीथिंग, ऑल दोस थिंग्स आइडेंटिफाई आल्सो करिए। Yes. मेक अ डिफरेंस। Yes. What is other important thing is कि अगर what you are eating is very important, but अभी तो डेटा कहता है कि आप किस समय खाना खा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है जानना। किस समय का मतलब ये देखा गया है कि अगर आप डिनर अर्ली करते हैं तो इट हैज मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। एक तो कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का आप लोगों ने अब सुना ही होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी कैंसर कम होता है, लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना कर पाए तो एटलीस्ट आप अपना डिनर टाइम जो है वो शिफ्ट करें। शिफ्ट करने का मतलब क्या है? अभी तो लोग सोचते हैं हम तो ऑफिस से आएंगे 10 बजे आएंगे तब रात का डिनर खाएंगे, ये चेंज करना चाहिए। अगर आप 9 बजे से पहले और एटलीस्ट सोने के टाइम से 2 घंटे पहले अगर आप खाना खा रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, then it has also seen that decreases your risk of cancer. So early dinner is very important. And last but not the least, लोगों को आजकल कोविड के चलते बॉडी इम्यूनिटी के बारे में काफी जागरूकता हो गई है, थैंक्स टू कोविड फॉर दिस, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी है दैट फाइट्स नॉट जस्ट कोविड और अदर इन्फेक्शन, इट फाइट्स कैंसर ऑल्सो। ये बात लोगों को पता नहीं है, बट एक्चुअली कई लोगों हमारे स्पेशली जब हमारा ओल्ड एज होता रहता है ना, तो हमारी बॉडी में कहीं कहीं छोटे छोटे कैंसर्स बनते रहते हैं। इट्स एक्चुअली योर बॉडीज इम्यूनिटी विच इज टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड बॉडी इम्यूनिटी, इसलिए आप लोगों को शायद स्टोरी पता होगी कि जब HIV एड्स वगैरह स्टार्ट हुआ था तो उन पेशेंट्स को काफी कैंसर भी हो रहा था अगर इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता। तो अगर आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करेंगे, सो नाउ सिंस बिकॉज ऑफ द कोविड देयर इज जस्ट सो मच अवेयरनेस अबाउट बॉडी इम्यूनिटी एंड पीपल आर ट्राइंग ऑल काइंड्स ऑफ मेथड्स टू improve their body immunity, whether in terms of diet, in terms of exercise, in terms of stress reduction techniques. That is all, that will also help you to fight and reduce the risk of cancer in your body. So अभी तो हम देख रहे हैं कि शायद कोविड से फाइट करेगा, बट मे बी 10 years down the line हम ये भी देखेंगे कि इन सारे मेजर्स की वजह से कैंसर का रिस्क भी कम हो गया है। तो इसलिए मैं कैंसर फ्यूचर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बट येस, चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल इज फर्स्ट स्टेप, and ensuring your mental being is also one of the important methods to decrease your risk of cancer. So Chavi, your thoughts, and then I think we'll wrap it up. I think what you said about diet makes a lot of sense. I also feel that sometimes people don't understand, जब आप जो कह रही हैं कि कब खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, people don't even understand during the day भूख नहीं है लेकिन खा लेंगे कि लंच टाइम और 2 बज गया, भूख नहीं है, ब्रेकफास्ट आपने लेट किया था, हैवी किया था, डाइजेस्ट नहीं हुआ है खाना, लेकिन और खाना है बिकॉज 2 बज गया है। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑल्सो, आई थिंक इफ यू जस्ट फॉलो योर बॉडी, if you just follow the signs that your body is giving you, that will go a long way in having a healthy lifestyle. भूख लगी है तो खाओ, जब पेट भर जाए तो बंद कर दो। ये नहीं कि वो 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खाने ही खाने, you know. Listen to your body. Listen to your body. Your body is saying, I'm done. You please let it rest now. So that's important. And are we closing the session? There's something I want to say. I think there are a few questions that we need to take up. मैं just questions. Yes, absolutely. उसके बाद we'll just hand over the platform. Yes. So question एक ये है, what is the risk factor for male breast cancer? So male breast cancer के risk factors are like female breast cancers, but we have seen because of the alcohol, and especially because of the hereditary, the genetic syndrome. So when you have a family member, 2 or more family members who have had cancers, there we see more incidence of this male breast cancer. So having positive family history of many members, and alcohol and obesity also, okay?
मोटापा इंडिया में काफी बढ़ रहा है और मोटापे की वजह से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, लोगों को ये बात पता नहीं है, बट यस, दिस इज वन ऑफ द रीसेंट रिस्क फैक्टर एडिशन. Is there any difference in the male breast cancer and female breast cancer? ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है. ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, मैनिफेस्टेशंस, दे आर एसेंशियली सेम. कुछ बायोलॉजी में फीचर्स है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, दैट विल बी टू डिटेल. बट यस, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर मैनेज्ड ऑन द सेम line, they manifest in the similar manner. So that's all. People are more intrigued with male breast cancers now. So please, स्क्रीनिंग के बारे में जो पॉइंटर्स बोले गए हैं, जो लाइफ स्टाइल के बारे में बोले गए हैं, जो कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बोले गए हैं, एंड प्लीज if anybody wants to share their experiences, they can also write to us. They can write to Lupin. We'll be glad to share that on our social platform. Vidyut ji, I would want to hand it over to you. Please take this forward. Vishrut ji, I'm so sorry. Vishrut ji, I would want to hand it over to you. We have had wonderful discussion and Chavi ke inputs remarkable the, and thank you Renu ji also for remarkable inputs. Just before you start, I just want to add here that we cannot stress more on the importance of self-examination, because that is the first step that will save your life. It's the easiest thing to do. You literally need 5 minutes, maybe once a month to do it. Yes. Please don't neglect it. And I think also what is important for people like foundations like Lupin is to make people understand how to do the self-examination. A lot of women don't know how to do it, and they do it just ignorantly, not really understanding what they are supposed to check. So that is also one thing. And I feel that just like brushing our teeth comes as second nature to us, examining the breast should also come as second nature, because this is something which will literally save your life. That is the only thing I wanted to say. No, that's a very important thought, and I'm just so glad that you brought it up, because nobody does it. I'll be very frank and honest. मैं कहीं पे भी talk के लिए जाऊंगी, awareness के लिए, and I ask people to raise their hands who are doing diligently self-examination. Nobody does it. Only when it strikes, then there is a panic. And then, oh, I did not know, I have never examined my breast. I simply don't know for how long that this lump was there. I just don't know. And there's just so much of panic. So it's very important that this thought should seep in, that breast self-examination is important and it makes a difference. Yes. Thanks, Dr. Priya, and thanks, Chaviji and Ms. Renu, for bringing all those insights for the patients and even for the audience who are listening to us. At the back end, we are getting that it is quite interesting program which is being run. One of the very important fact which has been highlighted by Chaviji is that you need to stay positive, have a self-breast examination. And I would take a line from her post only, that either you face it with positivity or you face it still, but blame the destiny. So it's up to you how you face it and how you do it. So with this, I would like to thank everyone for this wonderful session here. And I wish best of health to everyone. Thanks everyone, and have a very great evening ahead. Thank you so much. It was lovely being here. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Priya. Thank you, Renuji. Thanks, everyone. Thank you, Dr. Priya. Thank you. Thanks, Dr. Priya. So, sir, with your permission, shall I cut down the stream? I think we are done. Thank you. Thank you, Dr. Priya. You can discuss. Okay.